आप अपने जो माइक्रोफोन है वो टर्न ऑफ कर लें। अगर आप डिसकनेक्ट हो जाते हैं और वापस आपको कनेक्ट करना पड़ता है तो इससे ये होगा कि बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप चैट रूम में शेयर कर सकते हैं। मीनवाइल आई विल हैव अ लुक ऑन द चैट रूम एज वेल। So let's start with the second lecture of the first week. Uh, जो लास्ट लेक्चर था उसमें प्राइमरीली हमारा फोकस ये था कि कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू हीट ट्रांसफ़र कोर्स उनकी रिवीजन हो जाए। और साथ में आप आई वांटेड टू गेट acquainted with you since we didn't have contact for last 2.5 months। तो इस दौरान अगर आपको कुछ चीज़ें भूल गई हैं तो आप उनको रिवाइज कर लें, स्पेशली इस कोर्स से रिलेटेड जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनसे। उसकी जो स्लाइड्स थी वो मैंने शेयर कर दी थी मीटिंग रूम में ही। और आज का जो लेक्चर है उसकी स्लाइड्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, डाउनलोड एट होम, और आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। हर प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं उसका जो फर्दर रीडिंग मटेरियल है वो भी प्रपोज कर देता हूँ। So you don't have to stick to the presentation only. You can just go back and read the material which I propose. So आज का जो लेक्चर है उसमें जो प्राइमरी जो एक टॉपिक है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन का अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस, आज वो हम रिव्यू करेंगे। जो उसके बेसिक्स रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कंडक्शन एंड द गवर्निंग लॉ फॉर हीट कंडक्शन, दैट इज फोरियर्स लॉ, वो हम इससे पहले डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। एंड टू सम एक्सटेंट द एप्लीकेशन ऑफ हीट कंडक्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो कुछ हद तक हमने डिस्कस कर लिया है। एंड स्पेसिफिकली अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्मूलेशन जिसमें थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम ऑलरेडी कुछ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर चुके हैं। सो एट दिस मोमेंट आई विल अज्यूम कि आप फेमिलियर हैं ऑलरेडी हीट कंडक्शन मोड से एंड द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन और उसकी एप्लीकेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, आप उससे फेमिलियर हैं। So in today's lecture, we'll specifically focus on the dimensional condition for this application, कि जिसमें आपने rate of heat transfer through conduction की calculation करनी हो with specific dimension, and if we take it one dimensional model, then we primarily assume x dimension. Just one more point about the Fourier's law. It's a phenomenological law. That means it doesn't have very sound theoretical basis. It's primarily based on the observation कि जो through solid material या heat transfer through conduction होती है, it depends on the area, depends on the temperature gradient with certain proportionality. So that was the observation, and just based on the observation this law has been developed, and so far कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई जहाँ पे हीट कंडक्शन की कैलकुलेशंस हो और ये फोरियर्स लॉ ये वायलेट हुआ हो। सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन अ लॉ। जो एक की पर्पस होता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फोरियर्स लॉ आर द हीट कंडक्शन इक्वेशन, that is to calculate the temperature distribution in multiple dimension or in a single dimension that is concerned. So temperature distribution अगर उसकी physical applications अगर देखनी हो, you can assume any geometry. For chemical engineers, जो industry में हमारे पास vessels होती हैं या जो solid geometries हैं containing some fluid, we are very much interested to figure out which are the key points or the regions where temperature distribution is different from the other regions, या जहाँ पे temperature peak हो, because
the mechanical properties of the material, they are function of the temperature. For example, जो mechanical strength है material की, if we go higher in temperature तो mechanical strength उसकी lose हो जाती है. So we are very much interested to know कि कौन से ऐसे regions हैं vessels में जहाँ पे temperature higher होगा. So we should be focused on regions ताकि वहाँ पे जो material की application हो वो according to the temperature distribution हो. And this was just one example. You can take so many examples. For example, reactors में जो catalyst है, the activity of the catalyst is a function of the temperature. So we are interested to know कि temperature की distribution जो है within the catalyst वो एक certain acceptable region range में हो. It shouldn't go beyond that, and we want to control the temperature within the reactor. And similarly for structural engineers, for civil engineers, they want to make sure कि जो structure है उसकी जो mechanical strength है वो एक certain range में ensure कर सकें, and they want to make sure कि जो temperature की distribution है उस region में that is well known and well controlled. So these are the couple of examples. You can assume so many other examples for the application of temperature distribution. So the primary purpose is that we want to know कि जो temperature की distribution क्या है solid geometries में specifically, और उसकी जो calculation है, we can make those calculation based on the governing laws, that is for conduction, Fourier's law of heat transfer. जी चैट रूम में एक कमेंट किसी ने किया है जुनेद ने कि समवन हैज रिमूव्ड मी फ्रॉम द लेक्चर. सो आप काइंडली इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें. जो क्लास अटेंड करने के लिए आया हुआ है टेक इट सीरियसली और उनको बॉदर ना करें. सो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. तो इस तरह की जो हरकतें आप उससे थोड़ा सा अवॉइड करें. So the physical observation of the conduction is in the dimensional parameter. If we take x dimension, then the rate of heat conduction in the x dimension is proportional to the perpendicular area for the heat transfer. We normally take it as a जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं उसमें यूज करते हैं without any subscript or superscript. So this is understood in heat transfer that A is the area of the heat transfer. So how we will assume it, let's say the heat transfer is in the x direction, then we'll take area perpendicular to the x direction. That means the length of y and the length of z, the product formed from these two lengths will be the heat transfer area. This is the actually perpendicular area to the x direction. If we take out the proportionality, then we introduce a new constant, that is thermal conductivity, and we measure the thermal conductivity in watts per meter per Kelvin. And a special case for the derivation, if we take that the thickness under which the conduction is being studied is so small that it approaches to zero, then delta T by delta X with the specific condition of limit delta X approaches to zero, we can reduce it to a differential formulation. And also with a physical observation that the temperature different derivative, if it reduces, then the heat transfer it goes high. So अब उसको counter करने के लिए negative sign यहाँ पे. So this is the basic of heat transfer. So if we want to apply it in multiple dimensions, then sometimes we prefer heat flux rather than the rate of heat transfer, and the heat flux is nothing more than the rate of heat transfer per unit heat transfer area. So this is how we define the heat flux. And similarly, you can see this terminology of flux in other courses like mass flux, that is the rate of mass transfer per unit area of the mass transfer. Similarly, you can see momentum flux. So these are the terms which are common in the transport subjects. If we want to apply this concept in 3 dimensions, then the mass flux in x dimension is minus conductivity
partial t by partial x. So in multiple dimensions, since the derivatives are more than one, then we, rather than using a solid differential or derivative d, we convert it to partial derivative. So partial derivative specifically indicates that the independent parameters are more than one. So here in multiple dimension model, we have independent parameter x and y and z. At least three independent parameters are three spatial components in this specific case. And similarly, the heat flux in the y direction is minus k partial t by partial y. And similarly for z dimension, it's minus k partial t by partial z. And since the conductive value, it belongs to material. And if the material has a uniform property throughout its domain or its control volume, then the conductivity will remain the same. Doesn't matter whether we are talking about the x direction or y direction or the z direction. Uh, these are the three components, spatial components of the dimension. In mathematical notations, rather than using three partial differential, sometimes a very unique term, inverse triangular form or inverse delta, that is termed as del. We use this del term, and the del term intrinsically means that we are talking about the dimensions, the spatial dimensions. So if we say del t, then we means that it's partial t by partial x, partial t by partial y, and partial t by partial z. So this is the term that we use in mathematical models. And while expanding it to more than one dimensions, this del t, this mathematical operator, we use partial t by partial x uh, with the vector unit vector, that is I, and that indicates the direction. So I, j, and k, lowercase k, these are the unit vectors. So they doesn't have to do anything with the mathematics. They are just for the representation purposes, that I is the vector directional parameter to the x direction, j is to the y, and k is to the z. So using all these concepts, we can derive this mathematical expression for the heat flux, or the alternate term, the heat rate, uh, by making a suitable calculations. And that model, we sometimes call it heat diffusion equation or the heat equation. This is the well-known term, the heat equation. Whenever we talk about the heat equation, that means we are talking about a specific mathematical equation, and that specific mathematical equation is given at the bottom, left side bottom. So this equation is the heat equation. And similarly, we have other forms of equations that is commonly known by their names, like a wave equation. That's another equation, especially when we talk about the partial differential equations, then these terms are there. So the heat equation is the mathematical formulation of rate of heat transfer, or the reduced form of the rate of heat transfer when we talk about the conduction mode. So now we'll focus how to derive this equation. That's a specific objective of today's equation. And if you just want to have a look what kind of terms are there, the first term in the left side, that is partial t by partial x, and the second derivative of this term, partial t by partial y, partial t by partial z. That means these are the temperature distributions in the x, y, and z directions. And not only the first derivative, rather we have a second derivative, and the second derivative uh, uh, operates on this first derivative. Plus there is another term q dot, that refers to the source term, and we will explain so what does it mean by source term. And on the right side, there is a partial t by partial t.
temperature by time. So that means this indicates the uh, uh, time distribution of the time of the temperature. And on the left side, three partial derivatives, they indicate spatial distribution of the temperature. So specifically in this equation, we have two kind of derivatives. One that operates in the time domain, and other three derivatives that operate in the space domain. So we have spatial distribution as well as the time distributions. So that is how we term it heat equation. So whenever we talk about the heat equation, intrinsically we will imagine temperature distribution in time domain as well as in the spatial domain, with another term that indicates the source, rate of heat generation or the rate of heat consumption within the specific control volume. So we have to derive this equation. So for the derivation purposes, let's have a look on the geometry. We can derive in 3 dimension, then reduce it to 1 dimension. Then we'll have a better idea how the equation will look like in 3 dimensions. So to derive the equation in 3 dimensions, if you want to go through the reading material in Jonas Angel textbook, Bergman heat transfer book, it's derived in 3 dimensions. So someone pointed out again in the chat room that someone removed Muqaddas Fatma. Again, I will say don't do this. Otherwise, I have to make you attendee rather than participant. So don't push me to do that. अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आप अवॉइड करें. Don't waste your time like this. Second किसी का comment है, explain the right side of the equation. I assume the right side of equation is someone is referring to this part. The right side of the equation is temperature derivative with respect to time. So we'll derive this expression, and then we'll have a look how we got this parameter temperature derivative with respect to time. But in general, this term indicates the temperature derivative with respect to time, means the temporal or the time distribution of the temperature. That सकते हैं कि अगर आप एक experiment start कर रहे हैं, so at 0 time, what will be the value of the temperature, and if you are like after a couple of seconds or couple of minutes or hours, so what will be the time? But then this time is on a specific dimensional point rather than on the distribution side. So अगर आप इसी टाइम अगर आप उसको जो राइट साइड पे फिगर है अगर आप उसको देखें, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर ओवर हियर वेयर द कर्सर इज. सो एज द टाइम प्रोसीड्स, यहाँ पे टेम्परेचर किस तरह से चेंज होगा. सो that change in the temperature with respect to time is indicated by the derivative of time temperature with respect to time. और ये किसी भी टाइम पे along the spatial dimension से किस तरह से change होगा, these are indicated by the temperature differential with respect to dimension x, y, z, depending upon whether we are concerned about the x dimension or y dimension or the z dimension. This is how you can read this equation. So this control volume is 3 dimensional. If you have a look on the axis, then the horizontal axis is x, vertical axis here, it's represented by z. Sometimes we take it y, the vertical axis, and the third dimension is y, that is
into the wall or away from the window, away from the screen. So that's a third dimension. uh, Before derivation, we need to make the balance, and before making a balance we have to imagine what kind of energy terms are involved in this control volume. So this is a very uh, mm, the same situation where you apply energy balance on the systems or mass balance on the systems. So for all conservative properties, the starting point of making the balance is the same, and that is we have to identify what is the property into the system and what is the property leaving the system, and what is the property that is net generated within the system. And you can make it like generation or the consumption, alternate way. And the last parameter is what is the change with respect to time. So these are the general terms that are applied to all conservative properties. It doesn't matter whether you are concerned about the energy or the mass or the momentum or the charge. These are all the specific or the same examples. But for this case, here the heat energy entering the system is Q, Qx, Qy, and Qz. These are the three terms that refer to the rate of heat entering into the system, and these are the conduction terms. And similarly, from the control volume, three terms are leaving. One is Qx plus dx, considering that the dx is the thickness of the control volume in the x direction. It's given over here. And similarly, for y dimension, it's qy plus dy, and qz plus dz is the rate of heat transfer in the z directions. These are the entering and leaving terms. And similarly, we have two more terms. One is the energy generation within the system, and you can assume this, you can understand this energy generation if you consider uh, example of, let's say, endothermic or the exothermic reaction happening within the system. So in endothermic or the exothermic reactions, each energy is generated or it's being used within the system, so it doesn't have to do anything with entering or the leaving stream. It's another property that refers to the uh, net generation within the system. So that's E dot subscript G. And the another term is the that indicates the time derivations, and that is the rate of change of the state of the system. So how thermal energy of the system changes with respect to time, and that changes is primarily because of the change in the properties of the system, like the internal energy of the system changes or the enthalpy of the system changes because of the change in the temperature within the system. So we have these four terms that makes overall balance of the heat for the system. And to write it in a general form, rate of energy entering into the system plus rate of energy leaving the system out, sorry, minus the rate of energy leaving the system plus the generation term, and that is equal to the rate of change of uh, energy of the system, and that is the time derivation or the rate of change with respect to time. So there is a point that कुछ लोगों को समझ नहीं आई इसकी एग्जांपल की. Let me go back again and I'll explain again. So I'm going to highlight the terms. We have four parameters or the four quantities in total. One quantity refers to the heat energy
entering into the system, and this is Qx plus Qz and plus Qy. These are the three energy terms that are entering into the system. And similarly, these three terms have to leave from the system as well, because we are talking about three dimension. So one is over here Qz, Qy, and correspondingly Qx terms. Qx plus dx, this is the rate of heat leaving from the system in the x direction, and similarly in the y direction, and similarly in the z direction. These are two type of quantities. One is entering to the system and another one is leaving the system. So more than that, we have two other terms. One is the rate of energy generation within the system. And rate of energy generation can be from several reasons. And these are basically the source term. If we, let's say we have an electrical heater placed inside the control volume, and because of the electrical energy, we'll get some thermal energy. So that is the source term. It has nothing to do with the inlet, nothing to do with the outlet. This is actually generation within the system. And similarly, if we have a chemical reaction happening in the control volume, so endothermicity or an exothermicity of the reaction, that will generate or utilize some heat. So that is energy generation, net energy generation within the system. That is the third type of the term, or the third type of the property. And the fourth property is, because of all three kind of terms involved in the system, we may have a change in the temperature, a change in property of the system itself. That is intrinsic or the property of the system. So if because of the inlet and outlet, or due to generation, temperature of the system changes, then we will have a rise in the temperature, or the energy stored in the temperature. So this fourth term indicates the energy stored, net energy stored in the system because of the change in temperature of the system. So it is different from three other terms. So in total, we have four terms involved in the energy balance, and the four terms are, one is energy into the system, energy out of the system, energy generation within the system, and uh, energy stored in the system. So these are the four terms. So before proceeding, let's make very clear. We have four type of notations used to refer to heat. One is simply Q, without any subscript or superscript or dot. That indicates rate of thermal energy. We measure it in watts. Then we have dimensional rate of energy, Qx, Qy, and Qz. They refer to the rate of heat conduction. And when we talk about the conduction, that means intrinsically we talk about the dimension. And that's why we measure it in watts per meter. And then in the last lecture, we used a term Q double prime that refers to the heat flux. And heat flux is nothing more than the rate of thermal energy per unit heat transfer area. That's why it's watt per meter square. And another term that we are going to introduce in this lecture, because of the generation or the source term, that is Q dot. And Q dot refers to rate of heat generation per unit volume, and that's measured in watt per meter cube. So due to difference in the dimensions, we have one watt, another watt per meter, another watt per meter square, and another watt per meter cube. So we'll be using four type of terms, all referring to the heat. So now we have to figure out their mathematical expressions, that rate of energy in, out, generation, and storage. What will be the mathematical expressions? How we can represent these four terms in the mathematical terms? The rate of energy in, because we are talking about the conduction, so we can simply make use of Qx, Q sub y, Q sub z, referring to the rate of heat conduction
into the system. And similarly, for the rate of heat out of the system, that's again in the conduction phenomena. We can make use of notation q sub x plus dx. Dx specifically refers to the thickness of the control volume in the x direction, dx. And if we want to expand this qx plus dx in the Taylor series, just truncating all higher order terms, then we can keep it qx plus the change of rate of heat within the x thickness or the dx thickness. That is partial qx by partial x multiplied by of the layer. So qx by partial is the rate of change of heat. If we multiply with the actual thickness, then we'll get inlet plus whatever the change has been happened within the thickness dx. So in total, we'll get this term leaving the system. And similarly, we'll have the yth dimensional term and zth dimensional term, all the similar way. In the yth dimension, it will be the rate of energy entering plus whatever has changed within the system multiply by actual thickness in the y dimension. So these are the rate of heat energy leaving the systems. And for rate of energy generations, since we introduced q dot as a volumetric property, rate of heat energy transferred per unit volume or the rate of energy generated per unit volume, if we multiply with the volume of the control volume, and we can calculate volume of the control volume by multiplying its three dimensions. One is dx, dy, and the third one is the dz. If we multiply all these three thicknesses or three dimensions, we'll get the volume of the control system. So that is the generation term. And the storage term, we can make use of the intrinsic property of the system, uh, referred as a heat capacity. Any change with respect to time in the temperature, if we multiply with the heat capacity, multiply with the mass, then we'll get the enthalpy or the energy change of the system. So this volume is multiplied just to refer to that. We don't have the mass over here. It's a density. So density is mass per unit volume. If we multiply with the volume, then we'll get a very common expression, mcp delta t or mcp dt by t. And here t is referring to the rate. Basically, if we don't use per t, then it's not a rate expression. It will be mcp delta t or the t. To make it the rate, so we are concerned about the rate of the temperature. There is no concept of the rate of the capacity. We are not interested in the rate of mass flow. Rather, we are concerned about the temperature distributions or change in the temperature with respect to time. That's why we are using the partial t by partial t, means partial temperature by partial time. So that refers to the change in the temperature within the system due to change in the time. So this is the rate of energy storage. And if we make use of these four terms into the previous expression, general energy balance, then we can lead to the final expression of the heat equation. So just place all these terms into the general energy balance equation, and we'll get this expression over here. So let me use the pen. So this expression is nothing more than keeping all the definitions of the parameters and placing them into the general energy balance. So this qx plus qy plus q sub z, these are the input terms, heat energy entering into the system. These three terms, they refer to the rate of energy leaving the system. This term refers to the generation within the system,
where Q dot is specifically the rate of heat generated per unit volume of the control volume. And on the term on the right side, it refers to the change in the temperature with respect to time. In other way, it's actually the change of energy of the system with respect to time. So you can make a quick calculation, because entering minus, leaving these terms, you can reduce it to their partials, because qx by dx, it was defined as qx plus change in qx with respect to x multiplied by thickness of the dimension dx. So you can make of these two columns, rate of energy in minus out, you will end up with the negative signs of these three terms. Okay? Because it will be qz minus qz minus qz by partial z into dz. So you will end up with this expression. And the next is to make use of Fourier's law, because so far we haven't used any Fourier's law or any particular law. We only made calculations based on the conservation of the property. So here three terms, q a sub x, q sub y, q sub z. If we expand these terms by using heat conduction controlled by Fourier's law, and the three terms are explained over here by Fourier's law. We make use of these terms, plus divide the whole equation by this control volume, volume of the control volume dx times dy times dz, then we'll end up with expression. So if you are wondering how these expression q sub x, q sub y, q sub z, they came out, it's nothing more than conductivity value times area times partial t by partial x. Similarly in the y direction, similarly in the z direction. So how area came to be like dy times dz for x dimension? This is about the same definition that we were talking about earlier, that in the x dimension, whatever the heat transfer area you will be taking, it's perpendicular to the x direction, and perpendicular to the x direction is y dimension and the z dimension. So the product of both dimensions will end up with the area of the heat transfer. So in the y direction you have dx by dz, and in the z direction you have dx by dy. So these are nothing more than the differential areas by which heat transfer is taking place due to conduction. So finally we have this expression over here. And how you will read this expression, this is in fact not the first derivative, rather it came out to be the second derivative of the time. Partial by partial x, this is the derivative operator, partial derivative operator, and it operates on thermal conductivity times partial t by partial x. And similarly we end up with the second derivative of time in the y Excuse me, direction, sir. second derivative in the z direction. Just one moment. One term, that is heat generation, and the three quantities which were multiplied with the heat generation per unit volume. And since we divided the whole term by volume, so it went up. And similarly in the right side, this volume vanished because we divided the whole term by this. G, please. Any question on this slide? सर ये बार बार हमें ग्रुप से निकाला जा रहा है, ऐसे हमसे स्टडी नहीं हो पा रहा, तो काइंडली या तो कोई स्टेप ले, एक्शन या कोई एक्शन ले सख्त किस्म का इसके खिलाफ. सर आप में इट्स से कोई अबाउट पॉइंट आउट कर 7 सकते टाइम्स हैं? मैं जो है ना क्लास से निकल चुका हूँ, 7 टाइम्स अराउंड. सो नेक्स्ट टाइम मैं इसका जो टीम के कंट्रोल है वो इम्प्रूव कर दूंगा, और वी कैन मेक यूज ऑफ Zoom because we have relatively better control on the Zoom. So alternately ये हम कर सकते हैं. This is very stupid कि इस तरह से कोई भी रूम से एक दूसरे को निकाल रहा है. I was not expecting कि आप इतने idiotic हरकतें करेंगे कि एक दूसरे को मीटिंग रूम से निकाल लेंगे.
Otherwise, I'll do some better control next time. सर काइंडली ये दोबारा एक्सप्लेन करते. I'll just point out कि कौन मीटिंग रूम से निकाल रहा है, and I'll block that guy throughout this semester, and he has to suffer for the rest of the time. अगर मुझे पॉइंट आउट कर देते हैं आप लोग जो कि इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, then I'll have a solid hand on that. Otherwise, next time मैं इसका कंट्रोल थोड़ा बेहतर कर दूंगा. This is a bit unfortunate. इसमें मीटिंग में या तो अटेंडी बना सकते हैं, अगर अटेंडी बना देंगे तो फिर आपके साथ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन वो मुश्किल हो जाएगी. अदरवाइज I'll have to do something. अगर किसी को सीरियस कंसर्न्स हैं तो वो पर्सनली मुझे ईमेल के थ्रू लिख सकता है या बाद में चैट बॉक्स में लिख सकता है. अगर किसी को समझ नहीं आई, आई कैन स्पेंड मोर टाइम एंड इवन आई कैन शेयर द वीडियो लेक्चर्स एज वेल. लेकिन इस तरह से जो एक दूसरे को तंग करने वाली हरकतें, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. सर आप आई वाज ये नॉट एक्सपेक्टिंग के अटेंडेंस कर लें अब तो. जी सर अगर आप गेस्ट से हटा के इनका स्टेटस अटेंडीज पे कर दें तो फिर अगर आप मुझे पॉइंट आउट कर दें कि कौन है तो मैं उसको अटेंडेंस में कर देता हूँ. मुझे कोई प्राइवेटली पॉइंट आउट कर दे कि कौन है जो कि इस तरह से हरकतें कर रहा है तो मैं उनको जना अटेंडेंस में ले जाऊंगा. सर नेम नहीं आता जो रिमूव कर रहा है, पता नहीं चलता कौन किसको कर रहा है. एक्चुअली यही अनफॉर्चुनेटली ये सीन है कि उसका पता नहीं चलता कि कौन रिमूव कर रहा है. इफ देयर इज अ वे कि आइडेंटिफाई कर सकें कौन रिमूव कर रहा है, देन आई विल डू समथिंग विद दैट. अगर उस तरह से नहीं है देन नेक्स्ट टाइम मैं या तो सबको ही अटेंडेंस में बना दूं या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करना पड़ेगा. और अगेन अल्टीमेटली सफ़र उसमें आप ही कर रहे होंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ने और एचईसी ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, एक पेड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, सो आपको उसका फ़ायदा लेना चाहिए. अगर फिर भी इस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो इट्स वेरी इडियोटिक. सर वो अभी भी नहीं हट रहे, अभी भी करी जा रहे हैं रिमूव. आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कौन सस्पेक्टेड लोग हैं जो कि रिमूव कर रहे हैं? सर इनका पता नहीं ना लगता कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आता इनका नहीं कि चलता कौन कि रिमूव. कौन कर रहा है कौन नहीं. सर हर बंदे को 5-5 दफा रिमूव कर रहा है, कोई पता नहीं कौन. 5 से भी ज़्यादा बारी रिमूव हो गए हूँ. दोबारा फिर अटेंड भी नहीं होती, कनेक्ट भी नहीं होता. 10 दफा करें पता नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा. ओके मैं इसका देखता हूँ फिर अल्टरनेटली कि अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ ही हम कंटिन्यू करें तो ये कंट्रोल किस तरह से बेहतर बना सकते हैं. Yes, अगर sir. सारों को बाय डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस ही बना दें, आई डोंट नो एट दिस मोमेंट हाउ आई कैन डू दैट कि क्लास को ज्वाइन करने से पहले ही वो बेसिकली अटेंडेंस हों, बट आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि सबको अटेंडेंस बनाएं ताकि आपका एक दूसरे पे जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाए. लेकिन सो फार अगर किसी को कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो जस्ट पॉइंट आउट कर दे. अदरवाइज लास्ट 1-2 स्लाइड्स हैं जहाँ पे कंक्लूजन्स हैं एंड देन विल फिनिश दिस लेक्चर. सर आपसे क्वेश्चन करूं? जी जी सर ये स्लाइड जो ये चीजें आप कब शेयर करेंगे? प्लीज जल्दी शेयर कर दें. ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हैं, आप उसमें सर देखें, कहाँ? आपके ग्रुप में पड़ी होंगी ऑलरेडी. ये टीम के ग्रुप में फोल्डर्स में जाएंगे, अगर फोल्डर्स में जो लेक्चर्स वाला फोल्डर है उसमें पड़े टैब फाइल जी में जो, और उसमें जो फोल्डर है लेक्चर्स वाला उसमें ऑलरेडी ये लेक्चर मैंने प्लेस कर दिया था. यस सर. सर ये बुक भी बता दे कंफर्म कौन सी बुक है? वो हर लेक्चर के एंड पे मैं बता रहा हूँ कि कौन सी बुक से क्या लिटरेचर लिया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर जी इस लेक्चर के लिए देखना है तो ये एंड पे मैंने रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है, इवन कि उसका सेक्शन पॉइंट आउट किया हुआ है कि आप कौन से सेक्शन को किस बुक में से जाके रीड करेंगे. यस सर ठीक है. थैंक यू. ठीक सर तो क्वेश्चन. हेलो जी
सर ये जी एक प्रॉब्लम आ रहा था जी सर। हम्म सर ये कौन सा हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो सी जनरेशन हो रही है वो तो विद इन द सिस्टम हो रही है, लेकिन जो सी एनर्जी की स्टोरेज हो रही है वो भी तो विद इन द सिस्टम हो रही है। तो हम उसको उसका साइन अगर हम इक्वल के इस तरफ लेके जा रहे हैं तो उसे पॉजिटिव में ले रहे हैं, यानी इक्वल के हम राइट साइड पे लेके गए हैं इक्वेशन को। यहाँ सबसे टॉप पे सर इक्वेशन जो सी यहाँ स्लाइड में शो। सर आपका माइक किसी ने बंद कर दिया है। एंड अगेन आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे पता चल गया कि ये ऐसी कौन हरकतें कर रहा है, एंड दैट गाय विल फेस सीरियस रिस्पॉन्स ऑन दैट। हो सकता है कि पूरे सेमेस्टर के लिए उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दें, या उसके कोई सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता। सो डोंट डू दिस अगेन, आई एम टेलिंग इट वेरी सीरियसली। जी, इसमें जो जो टर्म्स हैं, जो क्यू डॉट की टर्म है, that is rate of energy generation. Let me use the pen. So this rate of energy generation or the heat generation or unit volume, so far you don't know what the dimension of this unit will be, कि ये basically positive term होगी या negative term होगी। So heat energy के केस में या delta H change in enthalpy of the system के केस में, this is by default are hidden inside the term, कि जब वो energy will be added to the system, it will be positive. When it will be leaving from the system, it will be negative. So this is a cumulative term, that the heat net rate of energy generation. This is not always the positive term. It can be negative or it can be positive. And similarly, for the energy storage, it's not openly get delta T by delta T or partial T by partial time. It will be positive or negative. कि temperature increase होगा या temperature decrease होगा with respect to time. So again that dimension will be hidden into the term, कि वो positive होगा या negative होगा. So even अगर आप general energy balance equation देखें तो general energy balance equation में this is the cumulative change happening within the system. और तीन तरह की टर्म्स हैं जो कि cumulative change काज कर सकती हैं: energy entrance, energy leaving, प्लस एनर्जी जनरेशन, नेट एनर्जी जनरेशन। ये तीन तरह की टर्म्स हैं जो कि नेट चेंज काज करेंगी विद इन द सिस्टम, एंड दैट चेंज वी कैन मेक यूज ऑफ टाइम वेरिएशन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज किस तरह की आएगी। सो होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो वी एंडेड अप विद सर इसके अंदर जो सा सर, उसने एनर्जी बैलेंस लगाया है सर, इसमें उसने पीछे ये इक्वेशन के ऊपर है सर। इसके अंदर कौन सी चीजें इन हो रही हैं सिस्टम के अंदर, उनको हम आमतौर पे लेफ्ट साइड पे लेते हैं, और जो सी आउट हो रही हैं उन्हें राइट साइड पे ले रहे हैं इसके अंदर। लेकिन सर एनर्जी जो सी वो स्टोर हो रही है वो तो सिस्टम के अंदर ही होगी ना, सिस्टम से बाहर तो नहीं निकल रही ना। एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो रही है, वो बेसिकली जो चेंजेस लेती हैं, वो जो लेफ्ट पे एंट्रेंस और राइट पे जो लीविंग वाली टर्म्स लेते हैं, वो बेसिकली एक तो एनर्जी इनटू द सिस्टम है, ठीक है, और दो टर्म्स बेसिकली हिडन है यहाँ पे। ये जो एनर्जी जनरेशन है, नेट एनर्जी जनरेशन, ये बेसिकली सिंगल टर्म नहीं है, इसमें दो टर्म्स हैं। एक इसमें कंजम्पशन की टर्म है और एक उसमें जनरेशन की टर्म है। सो जनरेशन इज पॉजिटिव और कंजम्पशन इज नेगेटिव, ठीक। कंजम्पशन बेसिकली राइट साइड पे होती है, और वो जो राइट साइड वाली कंजम्पशन है उसको जब लेफ्ट साइड पे लेके गए तो नेगेटिव आ गई। तो जनरेशन माइनस कंजम्पशन वो नेट एनर्जी जनरेशन है, जो कि एक सिंगल टर्म ई सब जी के तौर पे रिप्रेजेंट की हुई है। सो मेक श्योर दीज आर टू टर्म्स। लेकिन जब उसको कॉमनली मैथमेटिकल फॉर्म में यूज करते हैं तो हम एक सिंगल टर्म के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एंड
डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इफ इट्स एनर्जी जनरेशन कि वो जो हीट एनर्जी है वो बेसिकली सिस्टम में ऐड हो रही है, इन अदर टर्म्स अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो ये बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिवली काउंट करेंगे, और अगर वो कंज्यूम कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है सिस्टम की एनर्जी को तो वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे यही जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस इज द नेट टर्म। जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे दिस इज द कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कि ये जितनी भी टर्म्स या सिस्टम में एनर्जी को इंक्रीज कर रही हैं या एनर्जी डिक्रीज कर रही हैं, उसका नेट इफेक्ट क्या है ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम पे, और उसको एक स्टोरेज की टर्म के तौर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ओके सर। सो नॉर्मली जब हम बैलेंस अप्लाई करते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज पे, तो ये जो स्टोरेज वाली प्रॉपर्टी है इसको हम टाइम डोमेन में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से चेंज होगा, और बाकी जो डायमेंशंस हैं उसको हम स्पेशल डायमेंशन के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज वेरी कन्वीनियंट टू अस। ओके सर। ठीक। यस सर। So we have this general formulation of the heat equation. So जब भी heat equation की बात हो तो आपके डायरेक्टली माइंड में आपकी यही इक्वेशन है कि जिसमें तीन टर्म्स हैं जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 डायमेंशंस एक्सप्लेन कर रही हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन। सर फॉर डिस्टर्ब, सॉरी सर, वो सर वेट कर रहे हैं दूसरे सर ना लेक्चर का, वो लेक्चर का टाइम हो गया है। अच्छा, जस्ट मुझे अगर 2 मिनट दे दें तो मैं इसको वाइंड अप कर लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक हो गया। ठीक, ये लास्ट स्लाइड है। सो ये 3 टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एक्स, वाई और जी डायरेक्शन में। दिस इज द सोर्स टर्म। नेट एनर्जी जनरेशन को हम जो मैथमेटिकल टर्म्स में हम उसको सोर्स टर्म कह रहे होते हैं, और ये राइट साइड पे है। दिस इज समथिंग लाइक सिमिलर टू एमसीपी डेल्टा टी और डेंसिटी इनटू सीपी और इनटू पार्शियल टेम्परेचर बाय पार्शियल टाइम। अगर इसी को हम स्टेडी स्टेट कंसिडर करें तो स्टेडी स्टेट में एनर्जी ना स्टोर होगी, ना एनर्जी सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस होगी, ना वो उसमें बिल्ड होगी। देन वी विल हैव दिस टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज अ स्पेसिफिक केस। और अगर इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करें कि जो कंडक्टिविटी है, ये जो टर्म थर्मल कंडक्टिविटी और डेंसिटी और सीपी वैल्यू, ये 3 मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम मटेरियल प्रॉपर्टीज तीनों को कंबाइन करके एक अनदर टर्म इंट्रोड्यूस करवा दें, थर्मल डिफ्यूजिविटी, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी डिवाइडेड बाय सीपी वैल्यू, हीट कैपेसिटी वैल्यू, अगर तीनों को प्लग इन कर लें, कंबाइन कर लें, तो यही जो एक्सप्रेशन है इट विल टेक अनदर फॉर्मूलेशन। ठीक है, जिसमें थर्मल डिफ्यूजिटी को यूज किया हुआ। So again, this is another formulation of heat equation. So whether we are talking about this formulation, whether we are talking about this formulation, we are talking about the same thing. This is the special case कि जो कि steady state के लिए applicable हो। और अगर इसमें भी इसकी डायमेंशन को रिड्यूस कर दें तो यहाँ पे ये जो y डायमेंशन है और z डायमेंशन है, आप इसको ख़त्म करके इसको x डायमेंशन बना लें, और विद द स्पेशल केस कि उसमें जो हीट जनरेशन नहीं है, will end up with this reduced expression. So this is actually steady state heat conduction in one dimension when there is no source term involved. So all these formulations are again different formulations of the heat equation. So that's it with today's lecture. And पे एक homework है आपके लिए. After going through this mathematical formulation, just spend some time on making some calculations. So this is example 2.3 from the book Introduction to Heat Transfer by Bergman. आप जाके इसकी प्रैक्टिस करें, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बिफोर द क्लास जस्ट लेट मी नो इफ़ यू नीड मोर टाइम ऑन डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो हम ये एग्जांपल को या कोई भी सिमिलर प्रॉब्लम को स्लाइटली डिस्कस करेंगे और उसके कंपोनेंट्स में डिसइंटीग्रेट करके, एंड देन विल मूव ऑन. सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. ये उसका रीडिंग मटेरियल है, जाके आप इसका रीडिंग मटेरियल देख सकते हैं. सो दैट्स इट. नेक्स्ट क्लास किसकी है आपकी? सर इस्लामियात. डॉक्टर राशिद मुनीर. चलें ठीक है, मेरी तरफ से माज़रत कर लेना फॉर टेकिंग 10 to 13 मिनट्स मोर. सो सर वो okay, have a good अटेंडेंस time. तो मार कर ले सर.
हाँ जी, अटेंडेंस के लिए मैं सर्कुलेट कर दूंगा फॉर्म बना के, तो आप उसमें मार्क कर देना। ओके सर। स्ट्रेट। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।